Bismillahirrahmanirrahim. Today we have two sentences for correction. The first sentence is 10 students have passed and 1 failed. हिन सेंटेंस में जेका ग़लती आहे उहा टेंस जे यूज़ में आहे. ही टेंस जेको यूज़ थियल आहे उहो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस आहे ऐं कंजक्शन खां बाद जेको टेंस यूज़ थियल आहे उहो सिंपल पास्ट टेंस आहे ऐं असां कॾहिं बि प्रेज़ेंट परफेक्ट ऐं सिंपल पास्ट खे हिक ई सेंटेंस में यूज़ ईअं नथा करे सघूं त पोइ असांखे या त ॿिन्ही में पास्ट प्रेज़ेंट परफेक्ट यूज़ करिणो आहे या ॿिन्ही में सिंपल पास्ट. सो असां हिन खे ॿिन्ही खे सिंपल पास्ट कयूं था. 10 स्टूडेंट्स पास्ट एंड 1 फेल्ड. तव्हां ईअं बि करे सघो था त 10 स्टूडेंट्स हैव पास्ट एंड 1 हैज़ फेल्ड, त पोइ इहो सेंटेंस सही थींदो. The next sentence is he insisted me for visit that place. Now in this sentence the mistake is in the use of preposition. So insist on preposition on खणंदो आहे ऐं जॾहिं असां preposition यूज़ कंदासीं जेको verb आहे उहो उन जो ing form यूज़ थींदो, मतिलबु इनखे असां जेको आहिनि पार्टिसिपल चवंदासीं. सो प्रेपोजिशन खां बाद में असां पार्टिसिपल यूज़ कंदासीं. ही इंसिस्टेड मी ऑन विज़िटिंग दैट प्लेस. इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ थींदो ऐं पोइ तव्हांजो सेंटेंस करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.